तरीके से लगता था कि टेरर अटैक के बाद पहलगाम में टूरिस्टों का रश नहीं होगा, लेकिन इस समय हम पहलगाम की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर टूरिस्टों का काफी रश देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको बिल्कुल बता दूं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान के साथ साथ बैनुल अक़वामी पर्यटन भी जो के है वो हमें नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बाइसरन में अटैक हुआ है और अटैक के बाद कहीं ना कहीं लगता था कि टूरिस्टों का रश काफी कम नजर आएगा। हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल पर्यटक मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है कश्मीर। मैम, where from you? I'm from Thailand original. How do you feel like in Kashmir? I think it's beautiful place. People are welcome. It's quite safe, to be honest. I don't feel dangerous. Do you like any disturbance here? I like it here. Absolutely a stunning location, stunning view, and just like they said, Little Switzerland is true. How do you like in Kashmir? Is this your first visit in Kashmir? The weather really good. The hospitality is good, and the security I think is really good. So Do you like feel safe in Kashmir? safe and sound and very beautiful. People also safe. I didn't feel dangerous at all. So any message to people? I also can't remember. I go to so many areas. Today come to Pahalgam. Some news said can't come, but when they come is nice, safe and sound. ओके, थैंक यू। तो कुछ और पर्यटन हमारे साथ बात करने की कोशिश करके इनसे जानने की भी कोशिश करके। मैम, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर फ्रॉम यू? My name is Pen. I am originally from Thailand, but I live in England. Yeah, and I came here for travel with 2 weeks, 1 week in Leh and 1 week in here. Yeah, it's beautiful anywhere. How is this your first visit in Kashmir? Yes, it's the first time for me. How do you feel like in Kashmir? Oh, beautiful place and then nice food and nice anybody like people so nice. Do you like any disturbance in Kashmir? No. So any lot of message, any message? Oh, and the message to anyone in the world is come here, be safe, and then calm as people. Very nice. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कुछ पर्यटन जिनका यही कहना है, लेकिन ये नेशनल पर्यटन नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी पर्यटन हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि हमें कश्मीर सेफ लग रहा है। अनंतनाग दैनिक सवेरा, अनंतनाग कश्मीर।